So today we start with Java inner class. Java inner class or nested class is a class. One class is defined inside another class. Just a minute. So Java inner class is a nested class where one class is defined inside another class. Is called as the nested class in Java. Okay, and when you define like inheritance, so that means your class is present in a different part. First you define one class, then it is defining another part. For managing that class is like little bit difficult. If all the things are present in a one place, for managing all the class, it is very easier. Nested, that you learn about nested for loop. Nested for loop is what that you have to define a loop inside another loop. In a looping, you have to define another loop. A similar way, your nested class is what, like in a class you have to define another class. So like I will share the screen, then you will understand it. What actually it's wants to share. Java inner class or nested class that is declared inside a another class or interface. मतलब एक क्लास के अंदर आप और एक क्लास डिफाइन करोगे. We use the inner class to logically group the class and interface in one place. मतलब आपका जो क्लास का स्ट्रक्चर है लॉजिकली एक जगह पर रहेगा. तो अगर सारा चीज एक जगह पर रहता है, जैसे कि आप जाते हो रिलायंस फ्रेश जाते हो, और रिलायंस फ्रेश में क्या होता है, आपका वेजिटेबल भी मिल जाता है. You can getting a rasan also. Okay, so that you can say all the things are present in one place. Okay, so it is easier. मतलब मैं जगह जगह पर जाकर सारा चीज नहीं लाकर एक जगह पर मैं सारा इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ. सो मेरा जो टाइम है वो भी बच जाता है, एंड आई गेट ऑल द थिंग्स, और आई गेट द डिस्काउंट देन द नॉर्मल. ओके, so when you are defining a class, if all the things are present in one place, for analyzing it, for manipulating that class is very easier. Then what are the advantages of this inner class? There are basically three advantages of the inner class in Java. One is nested class represents special type of relationship that is it can access all the members, all the data members method of outer class including private. As you know that when you define a member as private, you cannot access that member to the outside of the class. मतलब वही मेंबर से वही क्लास में यूज हो सकता है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हम प्राइवेट डिफाइन करने से भी हम दूसरा क्लास में उसको यूज कर सकते हैं. अगर आपको प्राइवेट मेंबर को दूसरा क्लास में यूज करना है, then we're using this nested inner class. The advantages of inner class, there are basically three advantages. Nested class represent a special type of relationship that it can access all the data members. Okay, it contains all the data members. Nested class are used to develop more readable and maintainable code. It is logically group the class and interface in one place. So in one place you have to gather all the interface. Code optimization, it requires the less code to write. Okay, so there is no need to write the huge amount of code. मतलब दो क्लास अगर आप अलग अलग से लिखोगे then it will take the space, but it requires the less code to write. Next part, here it is a program. If you check here, we are defining a class test member outer one. मैंने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया.
class test outer 1, private int data is equals to 30, then class inner void message function। देखो क्लास के अंदर एक प्राइवेट मेंबर है, वही क्लास के अंदर और एक क्लास मैंने डिफाइन किया, टेस्ट मेंबर आउटर 1 के अंदर क्लास इनर मैंने डिफाइन किया, यहां पर मेरा void मैसेज फंक्शन है। एंड कैसे आप इनर क्लासेस को कैसे एक्सेस करोगे, पहले आपको आउटर क्लास जो है, जैसे कि नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर आउटर क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए इक्वल्स टू न्यू टेस्ट मेंबर आउटर 1, देन आउटर क्लास डॉट इनर, आउटर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट इनर इन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर क्लास। ओके, तो पहले मैंने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आउटर क्लास का नेम लिया डॉट इनर क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट हो गया इन, देन जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट था ओबीजे डॉट न्यू इनर। ओके, तो उसके बाद जो in ऑब्जेक्ट है वहीं से मैं मैसेज फंक्शन को कॉल किया, जब मैं मैसेज फंक्शन को कॉल करूंगा ऑटोमेटिक क्या होगा ना, इनर क्लास जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। So this is the way to calling the outer class function। पहले क्या होगा, मैंने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट नॉर्मली वी आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट, देन आउटर क्लास डॉट इनर क्लास ऑब्जेक्ट है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, देन ऑब्जेक्ट हो गया in, देन आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेफरेंस दे दिया obj इक्वल टू न्यू इनर, फिर in ऑब्जेक्ट से मैंने मैसेज फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, तो आपको दिखाएगा जो डेटा आप पास कर रहे हो वो डेटा यहाँ पर आपको शो करेगा। आज इट इज ए प्राइवेट, इट कैन नॉट बी एक्सेस टू द अदर क्लास, बट यहाँ पर इनर क्लास इसको एक्सेस कर दिया। अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम और एनी डाउट? Sir, please repeat this program, please. हेलो, Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आई एम ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me here, it is understood or not, or any problem? Sir, please repeat this program. Okay. So here we are creating a class test outer 1. It is a outer class. Inner class is what? In a class you have to define another class. एक क्लास के अंदर हम और एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास टेस्ट मेंबर आउटर 1, प्राइवेट int डेटा इज इक्वल टू 30, यहाँ पर एक प्राइवेट मेंबर मैंने डिफाइन किया, देन क्लास इनर, यहाँ पर एक इनर क्लास यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर हो गया void मैसेज फंक्शन। ओके, तो मैसेज फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, और ये जो मैसेज फंक्शन है कहाँ पर है, इनर क्लास में है, तो प्राइवेट int डेटा इक्वल टू 30, ये है आपका आउटर क्लास का मेंबर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट मेंबर आउटर 1 obj इक्वल्स टू न्यू टेस्ट मेंबर आउटर 1। सो आई एम क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास, देन इनर क्लास को कैसे कॉल होगा ना, टेस्ट मेंबर आउटर 1 डॉट इनर। ओके, तो ये हो गया आपका आउटर क्लास डॉट इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर।
ओके, तो पहले जैसे कि एक क्लास के अंदर और एक क्लास रहेगा, टेस्ट मेंबर आउटर वन हो गया आपका आउटर क्लास। आज नॉर्मली प्राइवेट जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, दैट मीन्स इट इज नॉट एक्सेसिबल टू अदर क्लासेस, बट इन द इनर क्लास यू कैन एक्सेस इट। तो हियर आई डिफाइन हियर प्राइवेट int डेटा इक्वल्स टू 30। उसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ पर क्लास इनर क्लास रह गया, यहाँ पर हो गया मेरा मैसेज फंक्शन। मैसेज फंक्शन क्या करेगा, ये जो डेटा है यहाँ पर मुझे शो किया। तब उसके बाद क्या हुआ ना, मेन मेथड में मैंने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट मेंबर आउटर वन ओबीजे इक्वल्स टू न्यू टेस्ट आउटर वन। ओके, मैंने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया। उसके बाद टेस्ट मेंबर आउटर वन डॉट इनर, मतलब आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, देन ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया ना, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट इनर क्लास, देन इन ऑब्जेक्ट हो गया इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, देन आउटर क्लास को यहाँ पर रेफरेंस दिया ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर। तो ये जो in ऑब्जेक्ट के मदद से मैं मैसेज फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे डेटा दिखाएगा, डेटा इज 30। क्लियर? Yes, sir. Yeah. Okay, so now we run this program. Now this program I will run. Okay, so now I run the file here. Okay, now check. It is showing you the value. Data is 30. That is printing you the data is 30. There is a private member. It is access here. Okay, so the next part I will cover here. Java local inner class, a class that is created inside a method is called as local inner class in Java. If you want to invoke Sir, tell me. Sir, in which scenario inner class will be used? In which? In which scenario inner class will be used?
Inner class basically, you can say, like for accessing the private member. So in that scenario, we're using, okay, like you can say, Okay. if you use the event handling programming in Java, or you when basically it is used in your Android development part, these are the classes are used. O- Okay, so where the event handling programming is required, so that is present in the what last end of your this part. Then in that part, basically it is used event handling part. Okay, Okay. and Okay. local inner class is created inside a method is called as local inner class in Java. So when you are creating a class inside a method is called as a local inner class. If you want to invoke a method of local inner class, you must instantiate it. Okay, you must instantiate it, or you have to create a object for it. Okay, and if you see that how it is working, private int data is equals to 30, then void display function is one function is present, then now we define a another in a void display function we define a class local, then void message is used. Okay, now check that normally we are creating a object of class local inner one object equals to new local inner one object dot display function. We're calling a display function here. So when you are calling a display function, automatically what happened? This class is created. Okay, so this class is called in this class automatic. We are creating a object of local class. Then through this object we are calling a message function. Okay, so here there is no need to create a object of parent class or object of outer class, then object of inner class. Here just we're creating a object of your only one class. Through that object we're calling a function. Local inner one object, new local inner one object dot display. When you call the object dot display, आप जब object dot display function को call करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक void display function कॉल हो जाता है. तो उसमें क्या है, और एक क्लास है, क्लास लोकल void मैसेज, यहाँ पर मैसेज फंक्शन है. तो लोकल आई इक्वल्स टू न्यू लोकल ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज फंक्शन यहाँ पर कॉल किया तो यहाँ पर आपका वैल्यू शो करेगा. ओके, एनी डाउट? Sir, again. हाँ, it is a Again, sir. local inner class means what? A class that is defined inside a function is called as the local inner class. So local variable means variable that is defined inside a class is called as the local variable. The similar way, a class is defined inside a function is called as the local inner class. So public class local inner, private int data is equals to 30. So we are defining a variable that is 30. Then we are defining a function void display function. In that function we are defining a class local. In the class local we are defining void message function. This function I have defined here. Okay, in this function I call data. So when I call data, then it is printing you 30 here. So how it is called? ये जो void message कैसे कॉल होगा, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वहीं पर हम ये जो क्लास के अंदर ही हम एक ऑब्जेक्ट बना दिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए लोकल आई इक्वल टू न्यू लोकल ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दिया. जब मैसेज फंक्शन कॉल कर दिया तो ये आपको आउटपुट आपको दिखाएगा. लेकिन ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, void मैसेज फंक्शन कब कॉल कैसे होगा, सॉरी जो क्लास लोकल कहाँ पर डिफाइन है, ये void डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है.
तो इसको कॉल करने के लिए पहले आपको ये जो क्लास का Sir. ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा. यस. Sir, here the L object is defined outside of the main method. Outside of main method. Uh, Which one? local L equal to new local. Here the L object is defined outside of the main method. Is it possible? No, it is possible. It is possible when you are defining a single class. But here what happened? Here that class is defined inside a function. The class is defined inside a function. Okay. Okay. So that your first priority is what? First you have to create an object of class. First you have to create an object of class. Then through that object you call the display function. Then when you call the display function, automatic this class is called. When this class is called, here we are creating an object of class. Class I equals to new local. Then through this object we are calling message function. Sir, actually object is created inside the main method and in any static block. But here local L equal to new local. We are not. The L You are not directly created. Ultimately, created ultimately, block. if you see that, it is created in the main method. Because through this instance you are calling, you are not directly. We are not directly created. It is not directly working. Here we are calling. As we are calling object dot displays, so that reason it is called here. Okay. So ultimately, Okay, it is called where? uh, Ultimately, it is here, static method. sir, here the L object is not created inside the main method. Object is not created. We are just passing here. Here Here, object is passed, yes? but the L object is not created inside the main method. No, it is not created. It is when it is created object. After you are calling object or display. When you are calling object or display, at that timing it Okay. is created here. It is called as what? Indirect calling. Is it clear? Is it clear to you? नहीं समझ में आया? Clear. Okay. So first of all, what happened? Your inner class is there. Object is created. But वो कब एक्टिवेट होगा? जब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी एक्टिवेट होगा. जब भी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनर क्लास का कोई काम ही नहीं. तो पहले हमने क्या किया? आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले फंक्शन को अगर कॉल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा? एक ही ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो भी सारी चीजें वो कॉल होगा. आज यू नो दैट व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, थ्रू दैट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस वेदर इट इज वेरिएबल और फंक्शन. तो मैंने तो ऑब्जेक्ट बना दिया, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बना दिया. जब मैं डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बना दिया तो ऑटोमेटिक जो मेंबर्स है, हियर क्लास लोकल इज व्हाट? इट इज ए मेंबर्स. वो फिर क्या हुए ना, क्लास लोकल फिर कहां पर प्रेजेंट है? डिस्प्ले फंक्शन में प्रेजेंट है. तो डिस्प्ले फंक्शन इज व्हाट? मेंबर ऑफ ए क्लास. तो ऑलरेडी आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एंड थ्रू दैट ऑब्जेक्ट आई कॉल द डिस्प्ले फंक्शन. देन देयर इज नो नीड टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज once you call the display function is do the all the works. Okay. Okay. Any doubt, Ankita, Okay. Abhishek? No, sir, no doubt. Now I show it this program practically.
So here we define public class local inner one, it is a class. Then here I define private int data is equals to 30. I'm creating a variable and I'm storing a value 30 here. Then void display function, I'm defining a function here. Then void message function, already I told you, I just run it. Okay, so I already explained it. Okay, so automatically it is showing you 30, that private member we are defined here. The next part of inner class is what? Java anonymous inner class. A class that have no name is known as anonymous inner class in Java. It should be used if you have to override a method of class or interface. Java anonymous inner class can be created by the two way. One is class, another is by interface. Okay. Anonymous class is not having any kind of name, and it should be used if you have to override a method of class or interface. Java anonymous inner class can be created by using of two way. One is by class, another is by interface. Then how it is actually working? See there. It is implemented by using of your abstract class or concrete class or interface. So here I have taken an example of abstract class. Abstract class person, abstract void it. Okay, abstract class person, abstract void it. Then see here we are creating a object of abstract class. In previous class I told you that we're not able to create a object of abstract class, but here we are creating an object of abstract class. Then how it is possible? Okay, एक क्लास में आपको बोला कि आप abstract class का object नहीं बना सकते हो, and that object it is automatically जो child class का object के through में call होगा, but here मैं abstract class का object बना रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर देखो पर्सन p इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ये लिखने पर ऑब्जेक्ट बन गया इधर. It is correct. This statement is correct if you see the logically. ये statement correct है or anything is missing here? Semicolon is not there. Yes, good. So here we are not mentioned semicolon. जब तक आप semicolon नहीं देते हो तब तक आपका statement complete नहीं होता है. That means आगे कुछ है. मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन इंस्टेंट सेट नहीं हुआ. ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकता है. मैं मेरा नाम दे सकता हूँ, कुछ भी अलग नाम दे सकता हूँ, लेकिन मेरा रजिस्टर नाम क्या है? ओके, सो you have the different name, you have different nickname in your home. Some name is calling by your parents, some name has given by your grandparents, your friend is also giving a name, but you have the one name
through that name you are what recognized by anywhere. So that is your register name. So it is present in your certificate or everywhere. So here I am creating a object of class person p equals to new person. Then I am not ending the statement. यहाँ पर मैंने statement को end नहीं किया. तो person p equals to new person. Then मैंने यहाँ पर एक function define किया void eat function. void eat function यहाँ पर मैंने एक function define किया. यहाँ पर मैंने end किया. तो फिर यहाँ पर मैंने object की मदद से function को call किया. Okay, so here I call the function virtually. I am not creating an object of class. Okay, so it is called as the virtual calling of a function. आप indirectly function को call किए हुए. यहाँ पर मैंने directly इसको end नहीं किया. Okay, end करने से आप देखो आपको बोला गया था कि जो abstract function है वो सिर्फ child class में use हो सकता है. Abstract function is a incomplete function which is only declare and it is used in the child class. यहाँ पर मैंने क्या कर दिया देखो, मैंने abstract function को भी यहाँ पर use कर दिया. Okay, but I am not passing any returns. I am just calling it. I am not overridden here. मैंने सिर्फ इसको कॉल किया है इधर फंक्शन देकर. तो p dot e. One question. हाँ. One question. Yes. Sir, if semicolon is not given in person p equal to new person, then what is the meaning of that statement? It is that we are not ending the statement here. We are not allocating a memory. जो p object में यहाँ पर अगर semicolon पास कर देता हूँ, that means Okay. मेरा ऑब्जेक्ट बन गया. मैं allocate कर दिया मेमोरी का. मैंने यहाँ पर मेमोरी allocate नहीं किया. मैंने सिर्फ रेफरेंस बनाया. ओके, मतलब क्या है, मतलब शादी का कार्ड बना दिया लेकिन किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तभी पता चलेगा हाँ इसका शादी है. सो आई एम क्रिएटेड इट. ओके, बट जब मैंने क्रिएट किया मेरे पास सैंपल कॉपी आ गया. तो मुझे यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए. क्या मॉडिफिकेशन चाहिए ना, सपोज as per as the government regulation you have to allow the 200 people at a time. तो मैंने सेग्रीगेट कर दिया. मतलब जो लोकल फ्रेंड है जो घर के पास रहते हैं उनको एक टाइम में बुलाऊंगा. जो मेरा फ्रेंड है सपोज मैं और एक होटल दूंगा, और जो रिलेट टू द पेरेंट्स दैट आई हैव टू डिफाइन इन अनदर होटल. तो यहाँ पर मैंने इस तरह से काम किया. मैंने ऑब्जेक्ट अगर बना देता हूँ तो मेमोरी एलोकेट हो गया, एक ही जगह पर सब काम हो गया. लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा दूसरा काम करना पड़े. यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया. डिफाइन करने के बाद यहाँ पर एंड किया. मतलब ये टोटल एक स्टेटमेंट हो गया. ओके, यू कैन नॉट से इट इज ए वी आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. वी जस्ट वर्चुअली कॉलिंग द फंक्शन. मैं वर्चुअली और इनडायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया है सिर्फ. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so ultimately I am calling to some all the person, but I am calling in the three phases, but in a different way. You cannot say it is we are creating an object of class here. We are virtually calling it. So you have the in C# also you are having a virtual keyword for calling a function. You have a virtual keyword. In abstract class we have a virtual keyword. Abstract and virtual is there. So it's just like that virtual class implementation here. Okay, Nalini?